Okay, welcome everyone. As we already discussed with my beautiful students, smarty students and boys and girls, they already told me they are agree to continue further with the syllabus, right? Agree? So let's get started. We were doing quadratic equation in the last week, right, dear students? Yes, ma'am. Okay. So in the last students, we already covered two lectures. First one, we have the nature of fruits. Then we have done a relationship between roots and their coefficients, right? In the second lecture, we had done the topics are Newton's formula. Then second one is common roots, right? Yes, ma'am. So today is actually last lecture of quadratic equation and very important topic. Everyone agree? Ready to move? Because quadratic Yes. equation, I every time Gurmana told each and every student it's a very important topic because we already seen the detailed analysis. See, 24 papers, 18 questions were there. It means because if you see na 24 papers, 18 questions are there, and in fact in complex numbers in 24 papers 39 questions are there, and if we combine these two, right, and they are leading to some papers will have two questions, some will have three questions from quadratic and complex numbers only. It means easy topic, more weightage, right? Move ahead. So can you tell me what will be a condition if one root is common? Just give me a brief idea, what was that? What was that brief idea? What condition I need to apply when the one root is common? Any idea, anyone? Just let me know what type of formula it look like. Tanisha, remember? Yes, ma'am. What was that? A2C1 minus C2A1 square is equal to B1 C2. It's like this, right? Yes, ma'am. Okay. When to implement Newton's formula? Any special condition must be there? Yes, relation between alpha and beta is given. And what's the relation that? What's it? Alpha raised to power n plus minus beta raised to power n, dear बच्चों? Yes, ma'am. Okay. And if I have ax cube plus bx square plus cx plus d is equals to 0, then can you tell me the relation between alpha, beta, and gamma? Then product of roots must be equals to minus d by a. wonderful. So, any doubt from the homework? Ma'am, last question. Which one? Last F8. This one, F8. See, they said x square plus x plus 1 is a factor of this cubic equation, then real root of the above equation. Then what will be the root for this equation? If this is a factor, if this is a factor, then it means some another factor value of x will be there that will satisfy this equation. मैम इसको मैम हिंदी में मैम रिपीट करना मैम. कहते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना बच्चे, ये जो है ना ये इसका फैक्टर है, जाने कि ये इक्वेशन इससे डिविजिबल है. यस मैम. मुझे ये पता चल रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन जो होता है ये मेरे को कभी भी रियल रूट नहीं देता, क्योंकि देखो आप इसका डी नेगेटिव आएगा, राइट? यस मैम. जाने कि आपको बताना है कि इसका रियल रूट कौन सा होगा, ऐसी कौन सी वैल्यू एक्स की होगी, क्योंकि एक तो ये निकल गया, इसका मतलब कोई वैल्यू तो ऐसी होगी जिसको सेटिस्फाई कर रही होगी. यस मैम. तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मेरे को लग रहा है या तो लॉन्ग डिवीजन लगा लीजिए, या फिर आप ये सोचिए कि मान लीजिए इसके साथ कोई भी एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर लीजिए और दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके बराबर कर लीजिए, तो चलेगा ना? क्योंकि जो भी वो फैक्टर होगा ये क्वाड्रेटिक है आपके पास, एवरीवन दिस इज क्वाड्रेटिक.
मेरे को बस एक लीनियर फैक्टर चाहिए, तो मैं एक लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर कर लूं तो चलेगा, सही है? मैम आप Yes, वो ma'am. सॉल्व करके दिखा सकते हैं? ओके, सॉल्व करके। किसी का हुआ सॉल्व बच्चे? किसी का भी सॉल्व हुआ था? ये तनीषा का डाउट है। तनीषा आपका है? व्हाट मैम? इज दिस योर डाउट? यस मैम। क्योंकि मुझे लग रहा है सिर्फ तनीषा ही करती है होमवर्क, और कोई नहीं करता। सी डियर बच्चों, अभी आप लोगों ने शायद यहाँ पे वो नहीं करा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा ना बच्चों। तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर ये मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन दिखती है तो ये इक्वेशन अपने आप में मुझे बताती है कि इसके दो रूट्स हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक। और तीन रूट्स मैं मान लेती हूँ, एक रूट इसका अल्फा है, तो अल्फा इंटू मेगा स्क्वायर जो है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? माइनस डी अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। एंड नोट इट, ओमेगा क्यू 1 के बराबर होता है, तो अल्फा की वैल्यू माइनस डी अपॉन ए हो गया डियर, ठीक। तो क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा था कि भाई इसका अगला रूट कौन सा होगा, तो कौन सा बन रहा है बच्चे रूट? इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है, आपका जो ऑप्शन है ना वो यहाँ पे माइनस डी अपॉन ए आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. Minus इसलिए D. मैम कंफ्यूज होता था इसमें। ओके, Yes, ma'am. so today we will learn about some graphical analysis and location of roots. Everyone ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं अपने एंड से बेस्ट ट्राई करूंगी कि आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाए, उसी तरीके से आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट भी करना, राइट? ओके मैम। सो डियर, अभी जैसा कि अच्छा मेरे को ये बता दो, थोड़ा सा हिंदी वाले बच्चे कितने हैं, मतलब इंग्लिश वाले बच्चे कितने हैं जिनको टोटली इंग्लिश समझ आती है? हिंदी वाले जिनको टोटली इंग्लिश समझ आती है? ओके, हरिणी एंड अवनी, राइट? Yes, ma'am. दुर्गेश, ग्रेट। हाय हरिणी, हाय अवनी। Hi, ma'am. Good Okay, evening, ma'am. good evening. So today we will finish the quadratic equation. Actually, I gave two options to students. I think in other sections you were going through the revision part, right? Yes, ma'am. But Yes, ma'am. I thought maximum students are from your batch, only 2 to 3 students are, and they are also my students. So I thought we can continue with the topic. Everyone agree? यस मैम। Yes, ma'am. Because there is nothing to revise till now, because I don't think we already doing the PYQs, right? So let's continue the topic so that we can start the new tomorrow we can do have practice with the PYQs of quadratic. Okay? मैम ma'am. टेस्ट Yes. on Sunday test is going to be conducted. Is any information is given to you? Not yet ma'am. Then might not be because this week is going on revision partner, and another UK batch is having off for this week, so might not be there. I will confirm this thing. Okay ma'am. Okay. So my dear bacha party, we first is analysis of a quadratic graph. Just look, everyone knows from the class 10th that whenever quadratic is there, जब हमारे पास quadratic होता है, whenever quadratic is there, it just look like a parabola. Yes or no? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. If the parabola mouth is open upward, राइट अनुज, अगर उसका माउथ जो है, पैराबोला का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ ओपन होता है, उसका मतलब मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, वो पॉजिटिव है, राइट गुरमन्नत? Yes, Yes, ma'am. And if a is negative, then parabola opens downward. Is it clear to everyone? Yes Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay. Next thing, just look at this part. This is a bottom line, right? So this point on x-axis is going to be minus b upon 2a. And everyone got confused why this is minus b upon a. You also have query for that?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. This line is tangent to this parabola. Yes, ma'am. Yes, And ma'am. everyone know from the physics part the derivative. So dy upon That dx will be upon dx. 2ax plus b, right? Yes, ma'am. When the line is parallel to x-axis, its slope is 0. So x is going to be minus b upon 2a. Just put this 2a. minus b upon 2a in this equation. Yes, ma'am. Or you can just find the solution for y. You will get the solution as minus d upon 4. Either it's up and downward or upward. This point remains same. Minus b upon 2a, comma minus d upon 4a, minus b upon 2a, minus d upon. Noted? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first, then we were talking about range. So can you tell me the range for this part? Any idea? Can you clear out the range? Real number? Real number. Okay. Anyone else? Ma'am, positive. Okay. Any other idea? मैम इसका पैराबोला मैम ऊपर की तरफ होगा ना मैम? Hmm. तो रेंज क्या होगी? Let's come to this part. See, whenever you are having a is positive, then your range is minus d upon 4a to infinity. It means your parabola is upward. So minus dA to infinity, right? Yes, ma'am. And when you are having A is negative, then you have parabola on the negative side like this. So it's Yes, going to ma'am. be minus infinity to minus d upon 4a. When your quadratic equation is positive, your parabola is upward and it will not touch your x-axis. When your parabola is negative, it will be up and downward, but it will not touch the x-axis. Clear, Durgesh? तो बच्चा पार्टी जिन लोगों को नहीं पता चला इंग्लिश में वो देखिए कि सिंपल सी बात है कि मेरा जो रेंज है, रेंज का मतलब है y का वैल्यू निकालना. तो y का वैल्यू अगर मेरा a पॉजिटिव होगा तो मेरी जो y की वैल्यू है वो माइनस डी अपॉन 4a से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करेगी. अगर a नेगेटिव होगा तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी अपॉन 4a तक जाएगी. क्लियर? यस मैम. Yes, अगर ma'am. मेरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी, जीरो नहीं दे रखे, अगर जीरो होता तो एक्स एक्सिस को टच करती. अब इन्होंने बोला मेरी क्वाड्रेटिक सिर्फ पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरी जो क्वाड्रेटिक है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, पर उसका जो माउथ है वो अपवर्ड ओपन होगा. इन द सेम वे अगर नेगेटिव है तो उसका माउथ डाउनवर्ड ओपन होगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी. क्लियर है सबको? मैम Yes, टच ma'am. Yes, किस ma'am. केस में करेगी फिर? टच जब इक्वालिटी भी आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा. ओके. ठीक. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ PYQ 2019 का क्वेश्चन है. रेडी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. The number of integral values of m for which the expression is always positive. Can you see what it wants to say? Always positive. Your quadratic expression is always strange positive. So it means my quadratic equation is greater than 0. Yes, ma'am. So I can say if the quadratic equation is greater than 0, then you must say its determinant must be negative. Because we already done for every quadratic, either it's positive or either it's negative. Its discriminant is always negative. See, 1 plus 2m, if it's a positive, what it means, you already covered. When your quadratic is going to be positive, when a is positive, when your quadratic is going to be negative, when a is negative, then it means for the question, it says my quadratic is positive. Then the very first thing come to my mind is that its coefficient of x square 1 plus 2m greater than 0. Agree? Yes, Second ma'am. thing, its d is less than 0. Right there? D Yes, ma'am. means 4 into 1 plus 3m's whole square minus
4ac, 4 into 4 into 1 plus m into 1 plus 2m, that must be less than 0. Can we solve for this? Ma'am, I did not understood. I will come to you. देखिए माय डियर, आपको क्वेश्चन में दो चीजें दी थी. क्वेश्चन ने मुझे दिया कि भाई जो मेरा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव है, ठीक. Yes, ma'am. जब भी मेरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है तो मेरा जो डी है वो नेगेटिव होता है, ठीक. Okay, ma'am. और मेरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होने का मतलब है उसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए वो भी पॉजिटिव होता है. क्या इतनी मैम इसका 7 आएगा मैम आंसर. ओके. हाँ जी, पहले इतनी बात क्लियर है. Yes, ma'am. तो भाई यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ गई -1/2 कि m जो है वो -1/2 से ग्रेटर है, ठीक. अब आप इसको Yes, सॉल्व कर लीजिए. यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी ना बच्चे. इससे क्वाड्रेटिक बनेगी ना m में, तो m की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं हम वेवी कर्व मेथड से. याद कीजिए. तो जो m की वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू 3 - 2√3 से लेके 3 + 2√3 तक जाएगा. क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम. अब आपको m जो है वो -1/2 से ग्रेटर था. m मस्ट बी ग्रेटर देन -1/2, राइट बच्चों? यस मैम. तो -1/2 से बड़ी बड़ी इंटीग्रल वैल्यू 0, 1 सब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 0 से लेके. यस मैम. तो 2√3 का मतलब है 2 × 1.7. तो 2 × 1.3.14 ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो इसको छोड़ दो. तो कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू हो जाएगा. 0, 1, 2, 3 और इसको देखिए कितना आएगा भाई 3, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. तो 6 तक जाएंगे हम. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाले नंबर्स हैं. और ये कितने नंबर्स हो गए? 7. अब जिसको डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है वो पूछिए. टेक योर टाइम. जिसको भी, तनिषा, ऋतिक, शिवम, हरिणी, अनुज और मन्नत एंड एवरीवन. मैम ये डी का वैल्यू लेस देन 0 हम लोग क्यों लिया? क्योंकि हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था कि भाई अगर मेरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव शो कर रहा है या तो मेरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव शो हो रहा है या नेगेटिव, लेकिन डी हर केस में नेगेटिव होता है मेरा. ओके मैम, थैंक यू. मैम अपने ब्लू पेन से जो लिखा है वो नहीं समझ में आया. अब मैंने फॉर्मूला लगाया b² - 4ac. डी का फॉर्मूला Okay, लगाया ma'am. तनिषा. मैम एक बार दोबारा समझा दो. हाँ, ये देखिए सबसे पहले मुझे क्वाड्रेटिक दे रखी थी, कहते वो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, ठीक. अगर मेरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो सबसे पहली चीज मेरे माइंड में आती है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तभी मेरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, ठीक. यस मैम. दूसरा, अगर मेरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो उसका मतलब मेरा डी नेगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा. यस मैम. यस. तो डी का फॉर्मूला लगा दिया. आप उनको सॉल्व कर लोगे, क्वाड्रेटिक बनेगी. वेवी कर्व लगा देना. आपके पास आ गया 3 - 2√3 थे, 3 + 2√3. और एक तरफ आपको एम ने बता दिया कि भाई ग्रेटर देन -1/2. तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो मुझे पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करना है, ठीक. तो इन दोनों के बीच में इंटेग्रल वैल्यू 0 से लेके 6 तक आ रही है. तो 7 वैल्यूज आ गई. सही है. ओके मैम. सबको सॉर्टेड है? किसी को भी डाउट है तो बताओ. Okay. Now we will move ahead with the topic location of roots. Very important topic. जैसा जैसे मैंने लिखा है ना अपनी कॉपी पे भी वैसे ही टोटल 6 कंडीशंस है. टोटल 6 कंडीशंस आर देयर फॉर द लोकेशन ऑफ रूट्स. आप लोग भी ना अपनी कॉपी पे पता है क्या करो, सबसे अच्छा मेथड क्या है, अपनी कॉपी पे ना 6 कॉलम बना लो, ठीक. क्लियर? क्योंकि अगर मैं ये करूंगी ना 1 पेज पे एक कंडीशन लिखूंगी, दूसरे पे तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, राइट हरिणी? सो बेस्ट वे जस्ट मेक अ टेबल, शॉर्ट टेबल, सो दैट आई गेट द आइडिया व्हाट आर द कंडीशंस शॉर्ट में. क्लियर? यस मैम. जैसा मैं आपको बताऊंगी, आप कंडीशन 1 लिखोगे, एक्सप्लेनेशन होगी, दैट्स ओके. लेकिन स्टार्टिंग में लोकेशन ऑफ रूट्स पे आप लोग ऐसा कुछ टेबल क्रिएट कर लीजिए जिसके पास 6 कॉलम्स हो. क्लियर बच्चा बाटी? ऐसा कुछ टेबल क्रिएट कर लीजिए जिसमें शॉर्ट में लिखेगा कि कंडीशन 1 क्या कह रही है, कंडीशन 2 क्या कह रही है, कंडीशन 3 क्या कह रही है. एग्री एवरीवन? यस मैम. वेरी फर्स्ट कंडीशन,
अब location is clear in my mind. What is location? It means a quadratic equation is given to me, right? And definitely it will have two roots. One is alpha, Tanisha, another one is beta. Yes, ma'am. So Anuj, if they're saying two roots are there, what will be the possibility? Either my two roots are possible greater than some certain value, given value, x naught. Either these both roots are less than these given certain value. Either they lie between the given certain value. So we will discuss these things one by one. So just be focused with me. I will take an only one example as it is given to us. Let x here. In every condition, we will configure with these topics, this question only, right? हाँ जी बच्चे कहते हैं कि हम अभी कंडीशन जो है लोकेशन ऑफ रूट्स की टोटल 6 कंडीशंस है मेरे पास, ठीक है? और आपको पता है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, राइट? अब मैंने ये बोला कि मैंने 6 की 6 कंडीशन के लिए एक ही क्वेश्चन रखा है. आप देखोगे ना मेरी हर स्लाइड पे सेम क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होगा, सिर्फ कंडीशन बदल जाएगी. कभी ग्रेटर देन होगा, कभी लेस देन होगा, कभी लाई इन बिटवीन होगा. कंडीशन सेम, क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम रहेगी, ताकि कैलकुलेशंस में ज्यादा वेरिएंस ना आए और मेरे को चीजें समझ आ जाए. ठीक है सबको? तो ये टॉपिक ऐसा है कि बच्चों को कंफ्यूज करता है, थोड़ा फोकसली सुन लीजिएगा सब कुछ छोड़ के, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए मैंने बोला कि एक टेबल, सबसे पहले टेबल में लिखिए व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एक्स नोट. नोटेड? जब मेरे दोनों के दोनों रूट्स एक्स नोट एक सर्टेन वैल्यू से ग्रेटर होंगे. फर्स्ट कंडीशन लिख ली. Yes, ma'am. So when both are greater than x naught, then I have three conditions. पहली कंडीशन क्या होती है कि जो मेरा d होगा वो greater than equals to 0 होगा. d must be greater than equals to 0. Second, a into a is coefficient of x square, a into function at the given point x naught greater than 0. Third condition is minus b upon 2a greater than x naught. Noted all the three conditions for the very first condition? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See how to implement. Very first, they said discriminant must be greater than equals to 0. That means m minus 3 whole square minus 4m must be greater than equals to 0. बच्चों, first condition. Right? So it means m square plus 9 minus 6m minus 4m greater than equals to 0. So m square minus 10m plus 9 greater than equals to 0. Just make the factorization. मैम इसका 10 आंसर आ रहा है. 9m minus m plus 9 greater than equals to 0. इसका मतलब m की दो वैल्यूज पॉसिबल हुई, या तो m की वैल्यू 9 होगी या 1 होगी. अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की बात है तो m जो बोल रहा है कि वो होगा लेस देन इक्वल्स टू 1, बट m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9. कुछ ऐसा ही आया होगा. मैम मेरा मैम 10 आया था मैम. अरे अरे 10 कैसे आएगा बच्चे? फैक्टराइजेशन तो ऐसे ही होगी ना, फैक्टराइजेशन तो वेरी नहीं करेगी आपकी. m लेस देन इक्वल्स टू 1 कैसे हुआ? अच्छा देखिए, आपको याद है हमने बेबी कर्व मेथड पढ़ा था. यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 9 आया. मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस, और मुझे पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है. तो m1 से लेसर 9 से ग्रेटर. ठीक है? यस मैम. फिर सेकंड कंडीशन, a कितना है 1 और f x नोट कितना है 2 पे वैल्यू चेक करिए. 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m greater than 0. It means 4 minus 2m plus 6 plus m greater than 0. तो 10 minus m greater than 0. तो यहाँ से m आया less than 10. Noted? मैम सेकंड एक बार और सुनिए. सेकेंड कंडीशन में a की वैल्यू आपने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक से देखी. a कितना है 1. यस मैम. x नोट कितना दे रखा है 2. तो 2 को पुट कर दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. 1 को इस फंक्शन को 2 पे ग्रेटर देन 0. क्या नोटेड है अब? सॉर्टेड? मैम सेकंड वाला का कैसे मैम किया आपने, वो एक बार फिर से बताएंगी? देखिए बिल्कुल बिल्कुल. a की वैल्यू 1 है, ये पता चला. यस मैम.
ने बोला a को मल्टीप्लाई करना है f x नोट से। x नोट कितना दे रखा है 2, 2 यहाँ पे पुट करा, 2 का स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा और इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया। ठीक है बच्चों, यस मैम। थर्ड कंडीशन माइनस b अपॉन 2m, यानी कि m मैम नेक्स्ट पेज पे बताइए मैम। क्या बच्चे मैम नेक्स्ट पेज पे। समझ नहीं आई मैम क्या? अगले पेज पे। अगले पेज पे करना है? यस मैम यस मैम। क्या अगले पेज पे करूं? मैम इस सवाल को मैम अगले पेज पे बताओ मैम। नहीं, यहाँ पे आपको दिख तो रहा, अभी तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करी मैंने डियर। नहीं मैम ये तीसरा वाला जो आप बता रही हो ना मैम। अरे वो अब देखो तो सी ना, मैं आगे अगले पेज पे आपको पूरा ड्रॉ करके बताऊंगी। अभी माइनस ओके। बी अपॉन 2a, माइनस बी आपको पता है ना ये है, यस मैम। तो माइनस माइनस प्लस m माइनस 3 और a कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन 2। तो बच्चे क्या आपके पास m माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन 4 हो गया, इसका मतलब m इज यस मैम। ग्रेटर देन 7। क्या ये तीन कंडीशन आप लोगों के पास मिली अलग अलग? यस मैम। Yes, सबके ma'am. पास आ गई ये तीनों कंडीशन? Yes, ma'am. नोट कर ली? यस मैम। क्योंकि फिर मैं अगले वाले सवाल में इसके जो अगली कंडीशंस है ना, जो प्लॉट करूंगी तो आप लोगों से ही पूछूंगी कि भाई बता दो। ठीक है, तो अब बताइए, सबसे पहले कंडीशन ने आपको क्या दिया था? m इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। सेकेंड कंडीशन Yes, gave ma'am. us that m is less than 10. Third condition gave you m is greater than 7. Right, everyone? Yes, Yes. ma'am. Just plot a number line. Plot these 4 points: 1, 7, 9, 10. Agree? Yes, ma'am. First condition, Yes, I ma'am. will represent with one number. One f is less, m is less than 1. These points are included. 1 and 9. 1 and 9 is included, right? Remember, na? Yes, ma'am. Okay. With same color, m is greater than 9. Are you comfortable plotting this? Yes, Agree? ma'am. सबको क्लियर है कि एक पेन से पहली कंडीशन प्लॉट कर दी, फिर अगली कंडीशन पे चलिए अगले पेन से। m इज लेस देन 10, भाई 10 से कम, जाने कि वो इस तरफ जाएगा। देन विद द नेक्स्ट पेन m इज ग्रेटर देन 7, m जो है वो 7 से ग्रेटर है। तो बच्चे तीनों पेन रेड, येलो, ब्लू एंड व्हाइट कहाँ पे मिल रहे हैं? मैम 9 पे। 9 से 10 में, है ना? तो 9 से लेके 10, 9 क्लोज हो जाएगा, 10 ओपन हो जाएगा, इसका ये आंसर आएगा डियर। यस मैम। सबको क्लियर है? एवरीवन एग्री? हरिनी, अवनी, किसी को भी डाउट? सॉर्टेड? शिवम, दिया? यस मैम। ठीक है, बड़े आगे। अगर पहली कंडीशन करनी आ गई ना, दूसरी बहुत आसान लगेगी, क्योंकि ये पहली थी ना इसलिए मुश्किल लगी। चले आगे। Okay, so just plot on your part. Next part is when both roots are less than x naught. Noted in your table. यस मैम। See, first and second condition is same. Only third condition is different. When greater is there, then we also have greater sign. When lesser is there, then we have less than sign. Agree? Yes, ma'am. So first condition must give me m is less than equals to 1 and m is greater than equals to 9. Remember? Second condition on solving, Durgesh gave me that m is less than 10. Remember? Because same question is there. I told you na, to save the time and calculations. यस मैम। Let third condition. It means m minus 3 divided by 2 must be less than 2 now. So m minus 3 is less than 4. So m must be less than 7. Ready to plot? Yes, ma'am. See, a number line is there. Again, same points are there. 1, 7, 9, 10.
9 and 1 is included. Let's check. Very first, we are less than 1, greater than 9. Right, Diya? Yes, ma'am. अगली बात करेंगे, m is less than 10. m is less than 10. Next is m is less than 7. So can you see which line you are meeting? Let me extend this line. 10, 1. So which part? One sir. Minus infinity to 1 is going to be the answer. Final. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Quite easy now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So two conditions are clear to everyone. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Let's move ahead with the third condition. What's the third condition? One root is less than and other is greater than x naught. It means x naught lie between both the roots. Yes, ma'am. One is lesser, one is greater. And see, very quite simple. Only one condition I have. How many conditions you have? One. बच्चे म्यूट कर लीजिए जिसके एंड पे ठीक है. Only one condition I have. And what's that? A into fx naught. What is A? Can you tell anyone tell me what is the value of A in the given quadratic equation? 1. 1. And fx naught, how to find fx naught? What is x naught? Ma'am, 2. Okay. So 4 plus k plus 2 into 2 minus k plus 3. And this equation must be less than 0. Yes, ma'am. Clear to everyone? Yes, ma'am. So it means 4 plus 2k plus 4 minus k minus 3 less than 0. So k plus 5 less than 0. So k must be less than minus 5. So answer going to be minus infinity to minus 5, both side open. Yes, ma'am. Three conditions are done, everyone. Yes, ma'am. किसी को भी कोई डाउट, कोई शंका, कोई कंफ्यूजन तो अभी बताओ. तनिषा, शिवम, दिया, अनुज, किसी को No doubt. सब पर क्लियर है. रौनक, रौनक क्लियर, अनुराग क्लियर, वत्सल, समीर, ठीक है. See, fourth condition. Now our interval is given to us, 1 to 2. And interval gave you my both roots are live in between this interval. Noted? Yes, ma'am. So, see, can you see the conditions? B square minus 4AC must be greater than equals to 0. Second condition is also same. Fourth condition is also same. I just need to check on the second point also, right? Yes, ma'am. Then minus B upon 2A. When lesser roots are there, that is less than. When greater roots are there, greater than. When lie in between the interval, then this value also lie in between the interval, bache. Yes, ma'am. Noted? Yes, ma'am. So, same condition. Very first condition will give me m is less than equals to 1 and m is greater than equals to 9. ठीक है? Yes, ma'am. Second will give me m is less than 10. Third condition I will sort it out. A is 1. So second point is 2. So 4 minus, nahi. There is little change. Earlier we had 2 point now. So third condition remains same. M less than 10. For the first one we need to calculate, right? Now I need to check on 1. So 1 into 1 minus m plus 3 plus m greater than 0. So m and m cancel. 4 is greater than 0 and this condition is quite clear. It's correct. Then the fourth, last one condition, minus b upon, that means m minus 3 divided by 2 lie between 1 to 2. So 2 to m minus 3 lie between 2 to 4. So 5 to m lie between 7. Clear? Ma'am. किसी को भी डाउट, कोई शंका,
हाँ जी शिवम, देखिए अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं करा शिवम, ये क्वेश्चन सेम ही चल रहा है जो हमने पहली तीनों कंडीशंस में करा था, ठीक है शिवम। तो अपन ने बात करी कि भाई अगर ये कंडीशन सेम है, एक ही क्वेश्चन चल रहा है, तो मेरे को पता है कि पहली कंडीशन क्या आंसर देगी। 1 पे मेरा पॉइंट चेंज हो गया था, मैंने निकाल लिया। 2 पे सेम ही पॉइंट था, तो मेरा m <10 ऑलरेडी सॉल्व था। इसका सोल्यूशन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है शिवम। Yes, ma'am. अब अगला, अगली कंडीशन उन्होंने बोला 1 से 2 के बीच में लाई करिए। मैंने इसको क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ऐड कर दिया, तो 5 से 7 के बीच में आ गई मैं, ठीक है। Thank you. अब इसको फाइनल आंसर निकालने के लिए, फॉर द फाइनल आंसर हरिनी, व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू प्लॉट अ नंबर लाइन। Yes, ma'am. सो दैट्स गोइंग टू बी, हाँ जी प्लॉट करिए नंबर्स। 1 है मेरे पास, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, राइट बच्चों। Yes, ma'am. So just take the yellow color. Less than 1, greater than 9. In 1 and 9 are included. Very first condition is clear. Then second condition, less than 10. Less than 10. Third condition. Third condition is lie between 5 to 7. See, are they having any common area? Because yellow are having on different sides. They never come join 5 to 7. Yes. जो 1 और 9 के साथ जो येलो कलर से मैंने करा है डार्क, क्या कभी वो 5 और 7 की तरफ आएगा? नो मैम। नो मैम, नहीं आएगा। तो मुंह दूसरी तरफ ही रहेगा। यस मैम। शोभित, उसकी सहमति नहीं बन रही किसी के साथ। सो व्हाट्स द आंसर? नो सोल्यूशन। किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो मैम। फिफ्थ कंडीशन, exactly one root lie between x1 and x2. इफ इस इंटरवल में एक ही रूट लाई करेगा, और देखो आपके पास एक ही कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? अगर अब आपको पता चला कि तीनों हमने क्यों बोला कि भाई टेबल बना लो, याद आया? इसकी कंडीशन है f(x1) f(x2) लेस देन इक्वल्स टू 0। तो भाई देखो क्या क्या आएगा, 1 पे चेक करो, 0 पे, 0 पे तो सिर्फ 2 बचेगा, इनटू ऑन x2 1 पे करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2, दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0। 2 तो गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। It means lambda minus 3, lambda square minus 3, lambda minus lambda plus मैम सी is an, आंसर है मैम। yes, मैम सी है मैम, सी। okay. तो भाई दो वैल्यूज आ गई, 1 और 3, प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 की बात कर रहा है तो नेगेटिव, तो आंसर सी आएगा बच्चों। अब किस किस को लगा कि मेरे को 5 कंडीशंस क्लियर हो गई? अगर अगर आपने वो कंबाइंड एक टेबल सा क्रिएट करा होगा ना, तो शायद बहुत इजी हो गया होगा। अगर नहीं करा होगा तो बहुत chaos है। हम फिर से समझा। तनीषा, अब मुझे क्या दिया है, मुझे ये दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। यस मैम। पहले वाली कंडीशन क्या थी कि दोनों रूट इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहे थे, अब बोला एक रूट इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो एक ही कंडीशन है कि 0 पे भी चेक कर लो, 1 पे, जो भी आपका इंटरवल है दोनों वैल्यूज पे चेक कर लो, और उनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। बस इतना सा करा है मैंने, ठीक है। वत्सल, जुल्फिकर, शिवम, हाँ जी बोलिए। हरिणी, यस हरिणी, No, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. If have we doubt, then let me know. No, ma'am. Okay. Last condition. Both roots lies outside. Both roots lies outside your interval. So the condition is clear. यस मैम। Yes, ma'am. So what should be the approach? What should be the approach for this?
Very simple. If both roots are lies outside, it means a into fx1 less than 0, a into fx2 less than 0. I just need to put one's 1 and one's 2, right? Yes, ma'am. So when I check on 2, it means 4 minus m minus 3 into 2 plus m must be less than 0. So 4 minus 2m plus 6 plus m less than 0. So 10 is less than m. M must be less than 10. Very first condition. Second, when I check on 1, so 1 minus m minus 3 plus m less than 0. So it must give you m and m cancel. It means 4 is less than 0, right? And that's true. Agree? Yes, ma'am. So I need to find the values of m. But there is a problem. We already find that f1 is less than. So, but f1, you check na f1 when f1 is 4, right? Yes. Yes. And instead fx1 must be less than 0. It means f of 1 must be less than 0. But it is giving us 4. 4 is not less than 0. Agree? Yes, ma'am. Clear? So which is not possible. So thus iska, what's the answer for this? No solution. Yes. Clear? Yes, ma'am. So all the 6 conditions are cleared. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 6 की 6 कंडीशंस अगर एक पेज पे लिख लोगे, अगर आप थोड़ा रिवाइंड करोगे अपने आप को, 6 कंडीशंस थी क्या क्या? सबसे पहले कंडीशन थी लेस देन, क्या ग्रेटर देन, कि x नॉट से दोनों रूट ग्रेटर है. अगली कंडीशन थी दोनों रूट बड़े हैं. फिर अगली थी कि एक रूट बड़ा है एक रूट छोटा है, राइट? पहली 3 कंडीशन ये थी ना दिया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पियासा अगली कंडीशन क्या थी कि मेरे जो दोनों रूट्स हैं वो इन बिटवीन लाई कर रहे हैं. फिर मैंने देखा एक रूट इन बिटवीन लाई कर रहा है. फिर मैंने देखा कि दोनों के दोनों रूट बाहर लाई कर रहे हैं. यही कंडीशन थी. Yes, ma'am. ठीक है. तो अल्टीमेटली आपने देखा कि पूरा का पूरा खेल इन्हीं सब चीजों से चल रहा था, मोटा मोटा सा. लेकिन जो आपको पढ़ाया गया दैट इज गोइंग टू बी. अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो कैसे करोगे? अपना उस टेबल को देखना. Just look at your table. Find the values of m for which exactly one root of the equation lies in the interval. It's going to be which condition? Ma'am, that one, which one has 4 conditions? Fifth condition. Is it fifth condition? Note. It's a fifth condition, as I told you. One root, exactly one root. Remember? If you created the table, it will be sorted. So it means f of minus 2, f of 4 must be less than equals to 0. Clear? Yes, ma'am. So you just minus 2, it means 4 plus 2m plus m square minus 1, and less than 16 minus 8m plus m square minus 1 less than equals to 0. Solve this equation, find the answer. Clear? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Next, if both roots lie between, and now this is a condition where the Harini was saying na 4 conditions. The fourth one. Yeah, fourth one. Clear? Yes, Shivam, Sameer, are you able to understand? Yes, ma'am. Because this is the best way. इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिलेगा. अगर आप लोगों ने टेबल बना ली है ना, तो जैसे अभी आप लोगों को फटाफट स्ट्राइक करे ना. अगर मैंने आपको बोला होता ऐसे ही पढ़ाती ना, जो भी लास्ट में क्वेश्चंस करवा दूं, सीधा क्वेश्चंस करवाती, तो लोकेशन ऑफ रूट्स बच्चों को समझ ही नहीं आता. Ma'am, option D is correct. क्या? Option D. Yes, ma'am. Ma'am, D. अरे वाह भाई, -1 से 3. Yes, correct. D options are correct. Wow. Clear? Yes, ma'am. यहाँ तक लोकेशन में किसी का कोई डाउट है?
No, ma'am, clear. No, ma'am. ओके, जरा मैं 2 मिनट देती हूँ, मुझे जरा सब लोग अपने अपने टेबल दिखाओ किस किसने बनाया. लेट मी चेक. मैम मैंने नहीं बनाया, ओके, शिवम भी वो हंस तो रहे. मैम नोट से मैम बना मैंने भी दिया। नहीं बनाया। हाँ, शिवम की तो मेरे को स्माइली ने मैम बता मैंने भी दिया. नहीं बनाया। वाओ, क्या बात है. मैम अभी तक नहीं बनाया क्योंकि फ्रेश करके बनाना है इसलिए. ओके, किसी ने नहीं बनाया. मैम नो यही मैम, नहीं बनाया. अरे वाह, क्या बात है. कितने कितने अच्छे बच्चे हैं, देखो कितनी बात मानते हैं. Dear students, everyone must mark your attendance in the chat box by sending your language also, that you are from Hindi language group, or just mention your group now. It's a DCP Hindi, DCP English. Okay. मैम सभी बच्चे ना अपनी अटेंडेंस, सभी बच्चे जितने भी क्लास में है वो सभी लगा दे, क्योंकि कुछ बच्चों की तो अटेंडेंस ऑटोमेटिक पोर्टल पे अपडेट हो रही है, बट 10-12 बच्चे रोज डेली दोनों क्लास में ऐसे होते हैं जिनकी अटेंडेंस रिफ्लेक्ट नहीं होती. तो सभी बच्चे ना अपनी अटेंडेंस ऐसे, 7 बच्चे जा चुके अपना हैं. नाम सही होना चाहिए और जिस नंबर से आपने क्लास ज्वाइन की है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है कि आप गलत नंबर से तो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. जिस बच्चे ने आज क्लास ज्वाइन करते वक्त नंबर डाला है ना, वो आप लिख देना चैट सेक्शन में. 6 से 7 बच्चे जा चुके हैं सर. हाँ वो मैंने देखा है मैम, क्योंकि बच्चे थोड़ा कम हो गए काउंटिंग में. हाँ, 4-5 बच्चे चले गए हैं. और लेकिन मेरे पास एक गूगल शीट बन जाएगी, वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ. ठीक मैम, ओके. So location of routes is clear to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. Okay, so this was all about quadratic equations, right dear? Our quadratic part is done. In the next session, as per the schedule, we need to start the sequence and series. But tomorrow I will just give you one session as a PYQs practice. We will do the 2023 PYQs. As Yes in the ma'am. I already told you there were how many PYQs from 2023? A table was shown to you now, 18. So tomorrow class we will have 18 questions. We will practice that only. Okay, ma'am. What must be the pre-work for that? Revising the concepts. अरे वाह, ये बोलने के लिए नहीं है, जैसे अभी टेबल, जैसे आप लोगों ने इतना सुंदर टेबल बनाया ना, सबने वैसा नहीं करना. Must go through all the concepts that we already covered in the quadratic equation so that you can easily implement, because I will only give you the final overview what you need to implement if you stuck in any question. Otherwise, I will not help you out. These were some questions based upon graph and range of quadratic expressions, then location of roots. Okay, let me check. If you have one question, let's see. Question number 7. What should be the approach? Which type? 1, 2, 3, 4, 5, 6. If both roots lie in the interval, which condition? Ma'am, 4. Wow. Sixth one. If exactly one root lie in the interval. Ma'am, 5th. Wow. Fifth. Wow. Then third. Second. Greater than was first or second? First. First one. Okay. So I guess things are quite clear. Okay, let me know what were the concept you learned today. Location of root. Okay. How many combinations are there? 6. And what are they? What are they? Ma'am, if both the roots are greater than x naught, Lesser than One x. root. then lie between x1 and x2. Okay.
And then one root lie between. Okay. And then both the roots are outside. Okay. So something like this, na? Yes, ma'am. Okay. Do you understand or do you learn how to implement these 6 conditions in actually? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So in the next session, as per schedule, I told you we need to start with the sequence and series, but tomorrow we will have a quadratic equations 2023 PYQs practice. So be ready with your concepts, your notes. You can take the help of your notes while giving answer for the questions. Okay, dear? And Okay, ma'am. you just missed to mark their attendance, just mark your attendance in the chat box. See you all tomorrow. If anyone having any doubt, they can stay. Others can leave. Okay, ma'am. Thank Ma'am, you. Thank you, everyone. Yes, yes. Bye, ma'am. ma'am, I have sent you 2 questions in your personal WhatsApp. Can you please explain that to me? When